Hello everyone, DPM 136. Let's see what we have today. What is the distance between the orthocenter and circumcenter of a triangle whose measure is 24, 26, and 10 centimeters? Now, if you guys are aware, 26, 24, and 10 is a Pythagorean triplet, which means this is a right angled triangle. Hypotenuse is 26 centimeters. You can take any side as base and height, doesn't matter. If you take this as 10, this becomes 24. How do I know that? Because 26 square is 676, right? And 24 square is 576, 10 square is 100. If you add 100 and 576, you get the result as 676. तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थोसेंटर एंड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्राइंगल. Now if we talk about orthocenter, what is an orthocenter? Orthocenter is point of intersection of altitudes, right? And circumcenter is point of intersection of the angle bisectors. होता है या perpendicular bisector? It's perpendicular bisector, right? Perpendicular bisector का point of intersection होता है. Okay. So, if I talk about circumcenter, circumcenter is the center of the circle that passes through all the three vertices of a triangle, of that particular triangle. So this is not perfect, but yeah, it would look somewhat like this. Okay. And you all know that in a circle, the diameter subtend an angle of 90 degree at the surface, right? So basically this length, if I name the triangle ABC, AC is the diameter of this circle, तो ये इसका center हो जाएगा. So AC जो hypotenuse है, उसका जो center होगा, that will be the center of the circumcircle, which is your circumcenter. So this is 13. So this will also become 13, the radius of circumradius basically. ठीक है. अब आती है बात ऑर्थो सेंटर की. सो ऑर्थो सेंटर में वर्टेक्स ए से अगर आप 90 डिग्री गिराओगे तो वो यहीं पे होगा. वर्टेक्स सी से गिराओगे इधर ही होगा. अब वर्टेक्स बी से ऑब्वियस सी बात है आप ऐसे 90 degree drop करोगे. So the point of intersection in any right angle triangle for the altitudes is the vertex at which the 90 degree is formed. मतलब किसी भी right angle triangle में जो orthocenter होता है वो आपका वही vertex होता है जिस vertex पे 90 degree बन रहा है. तो आपको क्या करना है, आपको ये रहा आपका orthocenter B, this is also O, and circumcenter C. इसको कुछ और ले लेते हैं, डी ले लेते हैं. सो बी सी या ओ सी का डिस्टेंस निकालना है. सो दिस इज द सरफेस ऑफ द सर्कल पॉइंट बी एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. तो ये भी रेडियस हो गई, हमको रेडियस पता है 13. सो दिस विल ऑल्सो बी 13. सो टेक्निकली द रेडियस of the circle, which is the circumradius, is your answer. Moving on, next question. The figure below shows four circles PQ with centers PQRS. Fine. The radius of each circle is equal to 26. If TU is equal to 10, this small part, and similarly CD 2 दे रखा है, AB आपको 6 दे रखा है, and VW आपको 8 दे रखा है. Find the perimeter of PQRS. ठीक है. आप इस सर्कल से इस सर्कल तक का अगर आप दो बार रेडियस कैलकुलेट करें, यहां से यहां तक 26 और यहां से यहां तक 26, तो आपने 6 को दो बार काउंट कर लिया, तो आपको एक बार 6 माइनस करना पड़ेगा. ऐसे ही आप हर तरफ करेंगे. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो रेडियस इज 26, 26 मल्टीप्लाइड बाय 8, और उसमें आप माइनस कर देंगे एक एक बार. ये जो दो बार ऐड हो गया, 6 माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे और 8 माइनस करोगे. दिस बिकम्स 48, 16 and this is 20 minus this is 10, this 14, 15, 16, 20, 6 आप माइनस करोगे, this becomes 182.
So 182 ऑप्शन बी इज योर आंसर. दैट्स इट. पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस निकालना है आपने. पूरे सारे रेडियसेस ऐड किए और जो वैल्यूज जो लेंथ आपकी दो बार ऐड हुई उसको आपने एक बार माइनस कर दिया. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The sum of length of diagonals of a rhombus of side 5 centimeter is 12. So you have a rhombus, sides 5 centimeter each. ठीक है. अब ये D1 और D2. So sorry. आपको दे रखा है, इसका सम दे रखा है. So D1 plus D2 is given to you as 12. Okay. So now if I see this is D1 by 2, this is D2 by 2, we all know that the diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. So can I say that D1 by 2 whole square plus D2 by 2 whole square is equal to 25? करेक्ट. यहाँ पे हमको राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज 5 सेंटीमीटर हो जाएगा एंड यू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. ओके. सो I'll square both sides in this equation d1 plus d2. This becomes d1 square plus d2 square plus 2 d1 d2 is equal to 144. इस पूरी चीज को 4 से डिवाइड कर दो. So this becomes d1 by 2 whole square plus d2 by 2 whole square plus this is half d1 d2 by 2 is equals to, this becomes 3s are and 6 are 36, right? d1 by 2 whole square d2 by 2 whole square is 25 plus d1 d2 by 2 is equals to 36. So d1 d2 by 2 की वैल्यू आपको मिल गई 36 minus 25 which gives you 11. So now if you know the area of a rhombus का फॉर्मूला होता है हाफ into product of diagonals. तो d1 d2 by 2 उसकी तो वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है. सो 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ABC is a right angle triangle with AB 6 centimeter and BC 8 centimeter. A circle with center O has been inscribed inside triangle ABC. The radius of the circle is. Okay. So there is a right angle triangle ABC. A circle is inscribed this way. ठीक है. ए बी आपको दे रखा है 6, बी सी आपको दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा आपका क्लियरली 10. पाइथागोरस थ्योरम. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सो आप रेडियस फाइंड करने जाएंगे, टेक्निकली आपको ये फाइंड करना है. ओके. So this is nothing but an in circle, right? This is called an in circle. इन सर्कल का रेडियस होता है इन रेडियस, जिसको आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. सो नाउ इफ यू रिमेंबर एरिया ऑफ ट्राइंगल के सारे फॉर्मूलेस, द मोस्ट बेसिक वन इज हाफ बेस इनटू हाइट एंड द अदर यूजिंग द इन रेडियस इज इन रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर. सेमी पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2. सो अगर इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले से दोनों को यूज करके आपको एक ही ट्राइंगल का एरिया मिल रहा है, विच मीन्स इट शुड बी इक्वल. So you what you will do, half base is 8, height is 6 will be equal to semi perimeter 6 plus 8 plus 10 by 2 into r, that which is what we need to find out. 2 से 2 cancel हो गया. 6 into 8 is equals to, this becomes 14, 24 into r. This becomes 3s r, this becomes 2. So your in radius is 2 centimeters. That's it. That is your answer. So for this you need to know कि कैसे निकलेगा, नहीं तो आपको बहुत लंबी मेथड करनी पड़ेगी कि आप इसको x मानोगे, इसको 8 minus x मानोगे, इसको भी 8 minus x.
तो ऐसे करते करते इसको 10 माइनस 8 माइनस एक्स मानोगे. सो यू कैन डू यूज दैट मेथड एज वेल, बट दैट विल टेक अ लॉट मोर टाइम. But this is the correct way to do it, the shortest way. Next question. In a triangle ABC, D divides AC in the ratio 1:2. So अगर ये x है तो ये 2x है, ठीक है, इतना. F is a midpoint of BD. F is a midpoint, okay, इसमें दिख नहीं रहा डायग्राम है, बट ये टुकड़े दोनों सेम है. Find the ratio BE is to EC. Okay. इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. Let's do one thing. I'll make a line segment which is parallel to AE passing through D, somewhat like this. Okay. So now understand, triangle BD, ये वाला X. This is the midpoint. तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये भी आपके दो इक्वल पार्ट्स होंगे. सो अगर ये Z है तो ये भी Z होगा, राइट. सिमिलरली आप इस ट्राइंगल को नोटिस करें, AEC को, ठीक है. इसमें जो है ये 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और ये साइड इस साइड के पैरेलल है, तो ये भी 1:2 के रेशियो में डिवाइड करेगा. तो ये ऑलरेडी Z है, तो ये आपका 2Z हो जाएगा, राइट. अब आपको BE रेशियो EC कैलकुलेट करना है, तो दैट वुड बी व्हाट, BE इज योर Z एंड EC इज योर Z plus Z, 3Z. So your answer is 1:3. So in this question, अगर आपको ये चमक गया कि आपको कंस्ट्रक्शन कैसे करना है, you could have done construction parallel to BD as well. आप इसको ऐसे भी parallel करके भी similarity लगा सकते थे, right? So that's it. That is your answer, 1:3. And also that's it for today's DPM, guys. See you tomorrow.